प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे नवाजा जाएगा सोनू शर्मा को, और हमारे आदरणीय तुषार जी यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच एक अतिथि के तौर पर देंगे। तो अब अगला मुकाबला, आज के दिन का तीसरा मुकाबला और पहला मुकाबला होगा जय हनुमान का। बहुत ही अच्छी शुरुआत, बहुत ही बढ़िया एक्शन और रन अप टू द क्रीज। जिस तरीके से शुरुआत करते हैं, वंडरफुल एक्शन, एंड वी हैव सीन हिम bowling well in the previous edition as well, the edition 2. Here he comes with a not long run up but pretty good run up, very healthy run up and very good action. Starts off with the back of length that just moves quickly in the hands of the keeper. Dot ball. Lovely, beautiful. Just swinging it on the leg side, bowling a beautiful slower ball. Pace off on that one. Earlier on was full on pace. The second one absolutely foxed the batter over there with the change of pace. That's what you want in T20 cricket. It's always about being unpredictable. It's always about not making the batter read what's coming from the hands. Started off really well into his spell. He just wants to get the fielders in the right position. Both the fielders on the leg side, one in the square leg, one in the cow corner. Pull shot, should be 1 run. Just get a leading edge, could not get the hang of it, and 1 run taken. So they open the account with a leading edge. We'll start here from the bowler. He's hitting the right areas. He's hitting the right chord. Good pace. You can see the ball is hitting the bat. That shows the pace that he's generating. That shingle should have been stopped inside a circle. You should always take a start. And when the bowler is bowling so well, so beautifully, you should always back the bowlers. So far, just the two singles of the bat for both the batters. They got themselves off the mark. We have seen a total of 50 runs is a decent total which can be defended. So I think they will be moving in the direction of being the first target in mind. Just into the first over. And normally this is the best bowler of the team that bowls in the power play. Aruna has certainly shown he is one big prospect and has a potential of becoming a big bowler in the Panchayat level for SANCOALE. Generates quite a bit of pace, good action, and has got a wonderful slower lick at the ball that he deceived the batter. Over the top, just might get a boundary. He's not timed that ball that well, and the ball has landed just inside. You can see the ball could not be powered away. The extra pace of the ball, hitting the ball very hard. He got it over the mid-off region, but could not go the distance. So a couple of runs for Sunil, player of the match in the previous outing, the skipper of the side for NAZIR Super Warriors. That's good shot. There's a fielder down there, straight in the throat. Well, he hit it really well, but they placed the man really nicely. That's a big corner area there, and that's been taken, well taken by the fielder, and they get the first breakthrough. The first blood has been drawn. It's 4 for 1 after 1. NAZIR Super Warriors as Arun Dodamani strikes.
And that comes the end of first over. I think the first over is totally in favor of the bowling. HANUMAN. They have got a brilliant start by their premium fast bowler Arundu Damani. Really sparkled. I really loved the way he charged into the crease, bowling the difficult length and getting the most important wicket. The player of the match in the previous outing is gone back in the dugout, so he has to watch the game from the dugout now. And this one, well, what a start once again. Pace on their delivery right in the block hole and knocked his stumps over. He has absolutely castled the stumps, and that is Amit Naik, who has to head back. Is 4 for 2. NAZIR Super Warriors are in trouble here. A highest bided player in the auctions, Kunal Naik from HANUMAN, and this is the reason why. And this is the reason why. What a start. Is a tall bowler. Very good action. Run up to the crease. And generates little extra, I think. Surprise the batter over there with the pace. And another batter comes in. Isak Makandar. So Isak comes in. Good pace. He is generating good pace and hitting the hard lengths. That hard length is hitting the bat harder. And that's the reason why I think HANUMAN owner wanted him in the side anyhow. Picked him for a very high price. Highest bidded. Kunal. And certainly has started really well here. You can see is very tall bowler. He's using the height to very good effect. He's getting a little bit extra bounce compared to other bowlers on this concrete surface, and that's what making the batters difficult, because he's not bowling in the arc. That's a difficult length, whether you are in T20, whether you are in leather ball or tennis ball. Great skills to have. And here it should be just a single. Got the leading edge. They're swinging high and wild, but it's not connecting at the moment. They're dealing in just the singles. 7 runs on the board so far for the loss of 2 wickets. NAZIR Super Warriors. Run out, and that was close. So player of the match in the previous game goes to Sonu Sharma. Will be presented by Tushar. I request Tushar Bab to kindly come in the presentation arena and kindly hand over the prize for a wonderful all-round performance from Sonu Sharma, the skipper of Team 13 Sky. Absolute thriller contest that was. Great encounter to witness. Last ball in the air and should be a single. So end of 2 overs is 9 for 2 NAZIR Super Warriors. So 9 for 2. Iqbal. Yeah, good start and in the air and taken. What a start here. Very nicely tossed up delivery. Beautiful leg breaker here that was from the bowler Iqbal Patel, and catch taken behind by Azim Patel. So brother doing the finishing job which was started by his other brother Iqbal. So a great combination, and the family combining together to give the third wicket. 9 for 3. NAZIR Super Warriors going in deep trouble.
What a start here from the leg spinner. Certainly, this is the reason why such tournaments are being organized. SANCOALE Big Bash. We are finding some new talent, the new prospect. If they are projected nicely, certainly can make their way into go on stage. Iqbal. Nicely. Well, he is very gutsy, I must say, in tennis ball cricket to flight this one. We have seen many leg spinners who are trying to push and bowl quick leg spinners. We have seen many of those, but to flight this one almost like leather ball cricket is very difficult to find such talent and such courageous bowlers. This time looking to drive the ball. Another one that pitched full is bowling the right length. Is bowling in the spot. They are waiting for the ball. Just the 10 runs on the board. The run rate currently at less than 6 runs per over. Less than 6 runs per over in a 5-over game. That is a scoreboard you never want to see. So they need to get a push on. Another one that's flighted. That's in the air and just over the top. Well, he missed the spot there, and it was a full toss and a great connection. He swing hard and gets it off the sweet spot over the square leg. Finally a 6 coming off after a long time. Well, this will happen because he's a wrist spinner. Sometimes it's very difficult to control the wrist. You might not land up on the same spot every time, but they are wicket taking bowlers. They always bring in something different. They started with wicket. You can expect 1 or 2 balls that might turn to be a full toss or might turn to be short balls. But if we can pick up 1 or 2 wickets, I think his job will be done. If anything in the less than 10 runs per over, it will be a great over from someone like Iqbal. Azim will certainly guide him. He is going to be a guiding force from behind. Yeah, slightly short this time. That happens to the wrist spinner. It's not easy. He is turning and he's giving a wonderful rip there, enticing the batter, but they are not going out of the crease just because wicketkeeper is standing just close to the stumps. That's a quicker one. That's a change of pace here from the bowler. Pace on that one. Marks the end. A decent over. Picks up a wicket of the first ball. 3 overs done. NAZIR Super is struggling here at 19 for 3. In comes Kumar Dodamani, known as Kuba. In the air and travels the distance. Starts off with a lower full toss ball. The batter is waiting for such deliveries, and that's a great strike. Well, even though it's a full toss ball, it needs to be put away. So they are getting a little bit momentum there. 6 in the last over and 6 on this one to begin. That's good one. That's good one. That's right in the perfect areas. Just giving a single. Well, they won't mind singles to be given away. They are controlling the game at the moment, the bowlers of HANUMAN. They should realize that when so much of variety there in the bowling attack of HANUMAN, they've got a leg spinner, right arm leg spinner. They've got a left arm orthodox spinner who is bowling at the moment.
Kumar got a variety in Hanuman bowling attack. That's lovely pickup shot. He had gone deep into the crease there and putting a short ball, smacking it over that square leg boundary for an absolute good strike. The pressure right back on the bowler. कुछ नहीं था स्कोर आया ये ओवर में ही आया लास्ट ओवर भी 10 ही था चलता है ये ओवर में आया 3 बॉल में 13 रन. Now that's a good bowling there in the air and dropped. Should have been taken. He reached there. Once you reach there for someone like Azim, should have taken it. But a couple of sixes is getting NAZIR Super Warriors back in this game. It's a good partnership here between Sunil Lamani, popularly known as Gadda, and Vinod. 2 sixes for Sunil, 1 6 for Vinod. That's where they are getting back into a shape. I told you somewhere close to 50 while with decent total. High, should be a chance. And taken very easily. Well taken there. Well judged. And a wicket there. 33 for the loss of 4 in the 4th over. $33. So in comes Ramesh Lamani. Last ball of the 4th over. Decent over. They got 2 sixes, 14 runs of this over so far. And that's nicely done. Well, just a wild swing. He was nowhere to the pitch of the ball. The ball pitched and went sharply away from the right hand. A dot ball to finish over number 4 is 33 for the loss of 4. $33. So here comes the last over. Yeah, lovely bowling there. This good variety. You saw one left arm orthodox bowling earlier on, and this one, both actions are slightly different. The earlier one was giving a lot of rip, Kumar. This one is started off from around the wicket. Giving the toss up there. This might be a 6 runs, yes. This landed right as a full toss ball, straight on the bat, taken a full toll here. Half a dozen runs for the batter, Sunil. He's a big hope here. He's played a blinder. When the team was in trouble, he's got them out of trouble at a strike rate of 275. Laced with 3 sixes, 3 big ones. A lovely pickup shot. That might be another one. He has got 2 out of 2. Gadda is on fire. Takes the score to 45. What an innings. A big innings certainly. 28 of 9 balls. List with 4 sixes. 4 big ones at crucial time. This is a crucial innings. When the team was in adversity, he has risen up really well here. That's what you want from the players. You have been picked up for good money.
and that might be just one run. No, that's no runs there. That's gone straight over the bails. 45 for 4. Couple of balls still left. 2 sixes. Can he get one more? Yeah, he advances down the ground, just looking for a single. He will be keeping the strike. He's taking a risk here, and he has completed it quite easily. As run out, they might go for the third one. They might even try for the fourth one. He wants the strike somehow. He might try for the fourth one. Run out of the cards, and he has done it. Can you believe? Can you believe this running between the wickets? There was just a single run at the long on region. He has taken 4 runs out of it. It's almost like he has stole the 4 runs, stealing the 4 runs from the fielder's hands. Absolutely outrageous. I've not seen anything like this. This in the heat at 1:30, when everything is heated up here. He has lost a lot of energy after scoring some big shots. He has run very hard between the wickets, and this is what it takes in SANCOALE Big Bash. This is what you want to see. Take the game within yourself. You need to have that spark. It's not only about the sixes. You have to sweat it out. You have to take the heat on yourself, not only on the body, and the heat inside you should transpire on the field, and that's what you want to see from a player like Sunil Lamani. What a striking 49 for 4. Absolutely fabulous, breathtaking. Well, he's searching for the breath now. And here comes the next one. Oh, that's good one. There's a good finish there. He's absolutely baffled him over there with the last one. But I think Sunil will be happy. That's a good finish in the end. 5 overs, if you consider, they were in deep trouble. They lost 3 wickets for not too many runs. But in the end, I think this innings has really given them a big ray of hope. 49 for 4, and the big contribution coming from Sunil Lamani with 4 sixes, so 4 big strike from his bat. And that's why you see a good decent total of 49 runs. 50 the target for Jai Hanuman. Let's see whether they can chase. Their bowling was pretty good, and nice time for the toss. So next game is going to be the 4th game. Friends Group of SANCOALE versus Bajrangi Capitals. Time for the toss of the next game. Bajrangi Capitals and Friends Group of SANCOALE. तो आज का है चौथा मुकाबला जो कि होने जा रहा है आगे 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 आने वाले समय पर बजरंगी कैपिटल्स वर्सेस फ्रेंड्स SANCOALE सुपर वॉरियर्स फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ SANCOALE टीम के कप्तान को अब जल्द से जल्द आना होगा टॉस के लिए, और साथ साथ बजरंगी कैपिटल्स टीम के कप्तान को भी लेकर आना है आपको, क्योंकि टॉस का समय हो चुका है। तो भाई कुछ नहीं मिलेगा, सही समय का वेट करोगे तो भाई ज़िंदगी बदलेगी और किस्मत भी बदलेगा जब तुम खुद को अपडेट करोगे तो। देखो भाई
हमारे स्कोरर कुछ हिसाब किताब तो रख रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि देखिए हम ज़रूर धन्यवाद कहेंगे हमारे ऑफिशियल स्कोरर जो कि हमें हर एक रन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, हर एक गेंदबाज और फील्डर को लेकर हमें नाम जानने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अभी तक वो दिक्कतें नहीं पैदा हुई है क्योंकि हमारे स्कोरर ये सारे जानकारी हमें दे रहे हैं मात्र तनिक समय में, तनिक बोले तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। देखो ये है भाई स्कोरिंग डिपार्टमेंट, तो हमारा फर्ज बनता है नंदेश नायक सर को मैं एक और बार तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। लीजिए यहाँ स्कोरिंग बोर्ड में तो स्कोरर तैयार है, कमेंटेटर संतोष कारबारी जो आप सबको कमेंट्री सुना रहे हैं, मैं भी तैयार हूँ। तो लीजिए अब शुरू करते हैं इस रन चेज को। 50 रन का पीछा करने वाली है टीम जय हनुमान, वो भी 30 गेंदों में 10 की औसत है। और लीजिए पावर प्ले की 6 गेंदें अब शुरू होने जा रही है। तो पावर प्ले की पहली गेंद विकेट देकर जाएगी, बेल्स लेकर गई है गेंद, मिल गई विकेट। अजीम पटेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था टीम के कप्तान को, उस भरोसे पे वो खरा उतरे नहीं है गुरु, विकेट गिराया यहाँ, बहुत बड़ी विकेट, काफ़ी तेज़ तरार गेंद थी, 140 165 150 किलोमीटर घंटा की स्पीड से गेंद फेंका था। तो बजरंगी कैपिटल्स के टीम के कप्तान को भी अब आना होगा। हाँ आप हैं बजरंगी कैपिटल्स सुपर। हाँ तो हमारे संगमेश सर आ चुके हैं टीम के कप्तान जो कि लीड कर रहे हैं बजरंगी कैपिटल्स को। बजरंगी कैपिटल्स सर फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ सांकोले टीम के कप्तान को भी अब जल्द से जल्द आना होगा टॉस के लिए। भाई ये टीम के कप्तान तो वैसे मौजूद है हमारे कमेंट्री बॉक्स में, संगमेश सर टॉस के लिए आ रहे हैं। ओके चलेगा चलेगा सर, तो अब जल्द से जल्द आना होगा विपक्षी प्रतिस्पर्धी टीम के कप्तान को टॉस के लिए। और बढ़िया गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने की एक प्रयास कर रहे थे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा हमें देखने को मिला है। उस एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर इलाके में फील्डर ने बहुत बढ़िया अपना प्राइज अंजाम दी, उसके बावजूद भी सिंगल लेने में कामयाब होते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि पहले ही मन बना लिया था सिंगल भागने के लिए, तो और उसी मन पे अड़े रहे और लीजिए सिंगल मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल के साथ अब जय हनुमान टीम का खाता खुलता हुआ। तो शुरुआती 2 गेंदों में 1 रन 1 विकेट है। और ओवर की तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद पर सिंगल मिल जाएगा, शायद 2 रन की मांग होनी चाहिए थी और हुआ भी, और 2 रन भी पूरा करने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। काफ़ी अच्छी है समझबूझ और अच्छा खासा ये तालमेल हमें देखने को मिला दोनों के बीच में, तब जाकर ये 2 रन पूरा करने में वो कामयाब हुए हैं। सुनील लबानी काफ़ी बढ़िया लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करते हुए, और ये गेंदबाज कि अगर कोचिंग सेंटर है तो भाई प्लीज़ जाकर एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि ये खिलाड़ी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गेंदबाजी देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से किया है पूरे टूर्नामेंट में, पिछले मैच में भी ये कारना में अपनी गेंदबाजी के दमखम पर इन्होंने किया था, एक और बार अपना दमखम झोंक रहे हैं अपनी गेंदबाजी में सुनील लबानी। एक और अच्छी गेंद इस बार उछाल कर खेलते हुए सीधे डाउन द ग्राउंड, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे, उनसे कोई चूक नहीं हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा मैं कहता हूँ, क्योंकि जगह वहाँ पर एक आदर गलती हो गई तो लेने के देने पड़ जाते थे, शायद ये बात को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से उस गेंद को रोका लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने, और 3 रन बचाने में वो कामयाब होते हुए। और ये एक और बार बढ़िया गेंद, रनआउट की खतरा मंडरा रहा है, उसके बावजूद भी सिंगल लेने की ये जो साहस दर्शाया दोनों खिलाड़ी ने, दाग देनी होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से भागकर ये पूरा 1 रन को पूरा किया है। तो शुरुआती 6 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 6 गेंदें 6 रन 1 विकेट है। तो टॉस के लिए आ चुके हैं दोनों टीम के कप्तान। इसी बीच टॉस का समय अब, और इस टॉस प्रक्रिया में भाग लेंगे महिनुद्दीन सर, टॉस के लिए आ चुके हैं संगमेश और टॉस का, हाँ टॉस उड़ाने के लिए। तो अभिषेक है एक टीम के कप्तान।
फ्रेंड्स है हनुमान हाँ बजरंग बोलिए ना बजरंगी अब दोबारा काफ़ी अच्छा ये स्ट्रोक और बहुत देर के बाद ये छक्का हमें देखने को मिलता हुआ। देखो ये एक इनिंग्स का पहला छक्का है। ये जो 6 है बल्लेबाज अरुण है, अरुण के बल्ले से आ रहा है ये 6 रन। तो 18 नंबर की जर्सी है, 18 नंबर की जर्सी देखते ही हमें एक बंदा याद आता है। वो बंदा तो आजकल पूरे विश्व क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नाम काम कमा चुके हैं, विराट कोहली, रन मशीन, द किंग कोहली को आप सब जानते ही होंगे। यहाँ पर भी 18 नंबर की जर्सी के एक प्लेयर है, उस प्लेयर का नाम तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि ये लोकल प्लेयर है और पिछले सीज़न में भी बहुत हलचल मचाई थी अपने बल्लेबाजी के दमखम पर अरुण ने। इस बार भी कुछ कर दिखाने की हिम्मत दर्शाते हुए पहली गेंद में छक्का चढ़ाने के बाद और इस बार बिल्ले का आउटसाइड एज लगकर गेंद गई थी, शॉट बैकवर्ड गली पर। और लीजिए यहाँ पर अपने सर पे हाथ रखते हुए गेंदबाज विनोद, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ एक मौका था करके, तो इसीलिए अपने सर पे हाथ रखे क्योंकि वहाँ पर फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, तब जाकर ये कैच पूरा नहीं हो पाया है। और इसी बीच सिंगल ज़रूर पूरा करने में दोनों बल्लेबाज कामयाब होते हुए। ओह विकेट मिल गई, इसीलिए तो हम ये कह दी अपनी गेंदबाजी के दमखम पर। तो कभी कभी हो जाता है क्योंकि कभी कभी बहुत दिनों के बाद आप क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हो, तब आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि अब अगली जितने भी मैच होगी विनोद के लिए वो बहुत बेहतरीन साबित होगी। हाँ और एक और बार काफ़ी तेज तरार गेंद थी, इस बार थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे। एट द वाइड का इशारा तो स्टेट अंपायर के द्वारा। ये वाइड के साथ आप टोटल स्कोर 15 रन बने हैं। दूसरा ओवर जारी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ही संघर्ष चलता हुआ बल्ले और गेंद के बीच में। और इसी बीच वो डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या बने हैं 15 रनों पर 2 विकेट खो रही है टीम। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में बनाने हैं 35 रन। हाँ 18 गेंदों में चाहिए 35 चाहिए, वो भी 3 ओवर की खेल में। 3 ओवर की खेल बाकी है ये मैच ख़त्म होने पे, तो 3 ओवर ही बचे हैं भाई। तो अब कम से कम 12 की औसत आपके सामने नज़र आएगी क्योंकि ये तकरीबन 12 की औसत से रन बनाने हैं अब बाकी की 18 गेंदों में। तो हर एक ओवर में कहीं से भी आपको छक्का ढूंढ कर निकालना है, एक क्लीन हिट और बाकी की 5 गेंद में कम से कम सिंगल लेना है हाँ बल्लेबाजी टीम को, तब जाकर बात कुछ बन सकती है। और गेंदबाजी टीम के लिए ये काम बखूबी निभाना होगा कि जिस प्रकार की गेंदबाजी अभी तक की है ना उसी मोमेंटम को बरकरार रखना है, बस ये काम करना है। और वैसे देखा जाए तो ये काम करने के लिए अब किसे बुला रहे हैं? गेंदबाज सुनील गड्ढा, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के असली हकदार बने थे सुनील गड्ढा। एक और बार गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए, काफी तेजतर्रार गेंद, काफी बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से बहुत बाहर फेंका था गेंद को, ये जानते हुए कि बल्लेबाज थोड़ा बहुत लेग साइड की तरफ ज़्यादा खेलते हैं करके। और इसीलिए देखिए ये सोच रचा है ना तो दाग देनी होगी भाई, ऐसे सोच समझ कर गेंदबाजी करनी है आपको अगर ये मुकाबले में बना रहना है तो। एक और बार घुटने के बल पर बैठकर जोर से बल्ला घुमाया हनीफ और बार बार डॉट गेंदे। अरुण बार बार डॉट गेंद कहीं ना कहीं दबाव जरूर डालेगी बल्लेबाजी टीम के ऊपर क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये ओवर की तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद पे भी कोई रन नहीं, स्वयं अपनी फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज सुनील लमानी और वापस जा रहे हैं ताना बुना बुनते हुए अपनी बॉलिंग मार्ग पर। तमाम रन संभावनाएं को खत्म करने के बाद अब वो वापस चल पड़े हैं अपनी बॉलिंग मार्ग पर।
ओवर की चौथी गेंद और इस बार भी कोई रन नहीं। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। देखिए बल्लेबाज को हिलने का मौका नहीं दिया था, रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, फिर भी गेंद जाकर लगी थी शरीर के ऊपर, शरीर पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई और बाद में गेंदबाज ने जाकर उस गेंद को उठाया। जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते पलट कर तुरंत इसी बीच कोई रन नहीं देखने को मिला है, क्योंकि बहुत तेज गए थे गेंदबाज उस गेंद को फील्ड करने के लिए। काफ़ी अच्छी है सोच गेंदबाज के द्वारा। इस बार उछाल कर खेला जरूर है, देखना होगा। मिड विकेट इलाके में, मिड विकेट इलाका तैयार है इस कैच को लेने के लिए और लिया भी है। लो अरुण भी अब आउट होकर वापस गए। ये जो आखिरी उम्मीद थी टीम की वो भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं से तुम्हारी हार की शुरुआत होती है। बैट्समैन का नाम अता पता बता दीजिए। 7 नंबर की जर्सी पे कौन है? दिखने में तो अट्टे कट्टे है ज़रूर, शायद सुबह जिम जाते होंगे, लेकिन जिम जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। आपको दिमाग के साथ साथ नज़ाकत भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये देखिए है क्या होशियार खिलाड़ी है, जहाँ ये जानते हुए कि लॉन्ग ऑफ के फील्डर थोड़ा दूर खड़े करके, और इसीलिए देखिए कितनी जबरदस्त सोच रचा था। और इसी बीच देख गफलत हो रही थी दोनों के बीच में, हाँ ना कह रहे थे, पीछे मोड़कर देखा ही नहीं और लीजिए विकेट मिल गई रनआउट के रूप में। एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे और एक मात्र रन पूरा कर सके हैं, तो एक रन जरूर काउंट किया जाएगा। दूसरे पे आउट, एक ही रन। हनीफ को अब आउट होकर वापस जाना होगा। तो हमने एक और खिलाड़ी आ रहे हैं मैदान के अंदर। तो 3 ओवर के पश्चात टोटल स्कोर 16। 3 ओवर के पश्चात 16 रन बने हैं। 16 रन पर 4 विकेट खो रही है टीम। अब 12 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 34 रन, 12 में चाहिए 34। तो भाई एक बार निदास ट्रॉफी की फाइनल मुकाबले को याद कर लीजिए। निदास ट्रॉफी की वो फाइनल मुकाबले को याद कर लो, वहां पर भी यही समीकरण था। 12 में 34 चाहिए था टीम इंडिया को। यहां पर भी 12 पर 34 चाहिए था। वहां दिनेश कार्तिक ने काम तमाम किया था, विपक्षी टीम को सोचने में मजबूर कर दिया था। रुबेल हुसैन की इतनी बुरी तरीके से पिटा था कि बाद में सौम्य सरकार की अंतिम गेंद में जाकर वो जीत मिलती है टीम इंडिया को। तब जाकर निदास ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीतने में कामयाब हुए थे। दिनेश कार्तिक की वो काम कौन करने वाले हैं, ये सवाल उठा है अब। और ये लीजिए एक और बार फ्रंट फुट को स्ट्रेच किया था, एक और बार बड़े शॉट की प्रयास थी, और इस बार थोड़ी बहुत चालाकी नजर आए गेंदबाज, जिन्होंने अपना दिमाग सही तरीके से चलाया और गेंद को थोड़ा बहुत पीछे खींचा। बैकअप लेंथ गेंद थी, गेंद सीधी गई है विकेट कीपर के हाथों में लहराती हुई बिना कोई रन के। तो डॉट गेंद बहुत ज़्यादा ही प्रेशर डालेगी बल्लेबाजी टीम के ऊपर। ओहो ये लो क्या बेहतरीन विकेट है। अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की प्रयास कर रहे थे, फुटबॉल खेलकर गेंद को रोकना चाहा, गेंद जाकर लगी पैरों पर टकराने के बाद गेंद नॉन स्ट्राइक पर है। वो जो खिलाड़ी थे वो जो क्रीज है ना लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आ चुके थे। तो लीजिए यहाँ पर विकेट मिल गई है। तो नियम के तहत सही फैसला अंपायर के द्वारा, तो एक और विकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। अब जीतने के लिए और 9 गेंदों में 9 गेंदों में 34 चाहिए, 9 में चाहिए 34। तो आधे के आधे बल्लेबाज जो है वो डगआउट में नजर आएंगे, क्योंकि 5वां विकेट का पतन हो रहा है जय हनुमान टीम का। तो 9 गेंदों में चाहिए 34 रन, 9 में चाहिए 34। वाह मधुर आवाज बल्ले से, टन्ने की आवाज आई है, आवाज से फायदा तो जरूर हुआ है भाई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा संयम के साथ काम लेना था, ठंडे दिमाग से काम लेना था वहाँ लॉन्ग ऑन फील्डर को, और थोड़ी सी गलती हो गई लॉन्ग ऑन फील्डर के द्वारा। अरे गेंद को ठीक से पकड़ लिया जाए
पकड़ लिया तो होता तो एक विकेट ज़रूर मिलने वाला था यहाँ गेंदबाज को। और इसमें तो कोई गेंदबाज की कोई कसर नहीं है भाई, गेंदबाज ने तो कोई गलती नहीं की थी। वो बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। शायद इस बार अंपायर के ये दो हाथ फैलाने से हमें पता चल रहा है कि गेंद कहीं ना कहीं दिशा से भटकी है करके। तो अंगड़ाइयाँ लेते हुए अंपायर दोनों हाथ को फैलाते हुए वाइड का इशारा दे रहे हैं। तो लीजिए, अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार का है। अरे बॉल कितनी है? और 8 गेंद है और उड़ाया है गेंद को हवा में। अंतरिक्ष में गेंद जा गई जरूर है लेकिन खड़ी हो गई है हवा में। नीचे फील्डर बिल्कुल तैयार थे, काफी चौसार मस्त, और हिले नहीं थे, ठस से मस्त नहीं हुए थे फील्डर। जहां पर खड़े थे वहां पर खड़े होकर गेंद की इंतजार किया और जबरदस्त तरीके से अपने दोनों हाथ को आगे लेकर आए और लपक लिया उस कैच को। एक और विकेट का पतन। लीजिए, छठा विकेट गिर रहा है। अब नए खिलाड़ी कौन जा रहे हैं? आनंद 10 नंबर की जर्सी पे है भाई। तो विश्व भर क्रिकेट में 10 नंबर को लेकर बहुत सारे चर्चाएं आप देखते होंगे। सचिन तेंदुलकर की नंबर है भाई विश्व भर क्रिकेट में, आप ये देख सकते हैं। सचिन एक नाम है, वो लाखों का संसार है, वो खुद में ही सम्मान है, वो और विश्व क्रिकेट की एक बढ़िया पहचान है वो। वाइड वाइड, एक और बार शाहरुख खान की स्टाइल में वाइड का इशारा देने में मजबूर कर रहे हैं अंपायर को। दोपहर के टाइम में भाई, दोपहर के सत्र में थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। विकेट मिल सकती है। स्वयं गेंदबाज जा रहे हैं कैच को लेने के लिए और स्क्वायर लेग फील्डर ने कहा भाई मैं ये मेरा कैच है, आप इसमें ना आए तो बेहतर है करके। तो लीजिए, जाने दिया बस एक गेंद को पकड़ने के लिए। तो जबरदस्त तरीके से कैच को लेने में कामयाब। एक और विकेट का पतन होता हुआ 7 विकेट गिर चुके हैं 4 ओवर के बाद। 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 24 पर 7 है। अब जीतने के लिए 6 में चाहिए 26, 6 में चाहिए 26। तो भाई ये नए सरफराज नवाज को खोजने की ताकत, ये कारनामे के लिए इस टूर्नामेंट को इकट्ठा किया गया है। मौज लो, रोज लो, नाम मिले तो खोज लो। छह में चाहिए 26। अंडा बोलते थे उसका नाम कौन? 4 छक्के चाहिए थे और पहली गेंद नो बॉल है। नो बॉल के साथ साथ 1 रन भी बल्ले से यहाँ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 2 रन आ गए शुरुआती गेंद में। अभी भी 6 गेंदें आना बाकी है। 6 गेंदों में चाहिए 24 रन। अब वो फ्री हिट जरूर सिग्नल देखने को मिलेगी। तो देखो भाई, हमें तो नौबान ने लूटा, उनमें कहाँ गम था। हमें तो नौबान ने लूटा, उनमें कहाँ गम था। हमारा पैर भी वहां पड़ा जहां चूना कम था। अब 6 में चाहिए 24। 4 छक्के चाहिए। अबे लंबा था, रन ऑफ लेकर आते हैं गेंदबाज गोपाल लबानी की ओवर की दूसरी गेंद थी। दूसरी गेंद पे बिल्कुल लेग साइड की दिशा में खेलना चाह रहे थे। जिससे उन्हें पता चला कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है करके उस गेंद को छेड़छाड़ की। आउटसाइड एज लगकर गेंद गई थी उस एक थर्ड मैन के इलाके में और सिंगल ज़रूर यहाँ देखने को मिल रहा है बल्लेबाजी टीम के लिए। ये एक सिंगल के साथ साथ अब रन संख्या में भी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। इस वक्त 27 रन बने हैं, वो भी 7 विकेट खोते हुए। 5 गेंदें आना बाकी है। 5 गेंदों में 23 चाहिए था, अब 4 में चाहिए 23 रन। 23 4 में 4 छक्के चाहिए। ए भाई रुक आउटबीट होने को कोई रुक। लंबे हिट्स लगाने होंगे। मत जाओ। एकमात्र विकल्प बचा है यहाँ बल्लेबाज के पास कि मारो या मरो। यहाँ करो या मरो नहीं है, मारो या फिर मरो। ये लो, लीजिए भाई। क्यों कोसता है मुकद्दर को, तमाशा अभी बाकी है।
क्यों कोसता है? मुकद्दर को तमाशा अभी बाकी है, थोड़ा कोशिश तो कर, तेरी सांस अभी बाकी है। वाह वाह, खत्म। 3 बॉल में 3 में 22। ओह, शायद यहाँ पर विकेट मिलेगी। बिल्कुल विकेट मिलेगी। बहुत अच्छा कैच लिया है, बहुत मुश्किल कैच को आपने आसान में कन्वर्ट कर दिया। पीछे दौड़कर भागकर कैच पकड़ना ये किसी भी प्लेयर के लिए थोड़ी सी मुश्किल सा होता है, लेकिन ये खिलाड़ी उस मुश्किल काम को आसान में तब्दील करते हुए, और ये एक विकेट जरूर हाथ लगी है यहाँ गेंदबाज को। लीजिए, अब 2 गेंदों में चाहिए 22 रन। 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 22 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಡಿ ದಾನಿಗನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। इंट्रोडक्शन। इरफान काफी तेज सरार गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, बिल्कुल गोली की तरह गई है। लीजिए, बार बार खराब स्ट्रोक खेलने के प्रयास है, लेकिन आज नजीर सुपर वॉरियर्स टीम के कप्तान सुबह नाश्ता में क्या खाकर आए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज का दिन ना नजीर सुपर वॉरियर्स टीम को बहुत बेहतर चला है। तो जब आप प्रेशर को सुबह नाश्ता में खा रहे हो तब ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। प्रेशर लेते नहीं है, ये प्रेशर देते हैं। विपक्षी टीम को प्रेशर दिया है। दोबारा नजीर सुपर वॉरियर्स ने एक और बार जीत लिया है 20 रन से इस मुकाबले को। तो पॉइंट टेबल में टीम थोड़ी बहुत लीड करेगी अब जाकर, क्योंकि देखिए ये जो मार्जिन है 20 रन का वो बहुत बड़ी है, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखिए 5 ओवर के खेल में आप 20 रन से जीत रहे हो तो कहीं ना कहीं मार्जिन बहुत बढ़िया है। तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए सुनील गड्ढा, दोबारा आना होगा अब सुनील गड्ढा को। तो अब हमारे आदरणीय दिवेंद्र तुरस्कर जी से के हाथों से दिया जाएगा ये पुरस्कार। तो अब जल्द से जल्द आना होगा सुनील लवाणी को। तो हमारे ऑफिशियल अंपायर को मैं एक और बार तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। एक सर्वेश थे, रेवान और अर्जुन कटीमनी सर, 3 ऑफिशियल अंपायर्स ने मिलकर एक ज़बरदस्त प्राइज अंजाम दिए इस टूर्नामेंट को मैसिव सक्सेस बनाने में। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है स्ट्रांग बॉयज़ वास्को टीम की तरफ से आपको लाख लाख शुक्रिया अदा मैं कहूँगा। तो अब आंखों देख का हाल सुनाने के लिए मैं मेरे साथी कमेंटेटर, जो कि एक मशहूर कमेंटेटर की लिस्ट में हमारे सर के नाम इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि अंग्रेज़ी बहुत बढ़िया है। अंग्रेज़ी में वो पकड़ आपको सुनने को मिलती है जब आप अंग्रेज़ी आवाज़ सुन रहे हो। तब हरीश सर की अंग्रेज़ी देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आपको सुनने को मिलेगी। Match number 4 on day number 1. Bajrangi Capitals versus friends group of SANCOALE. The toss won by the skipper of Bajrangi Capitals, opting to bat first. They almost could have pulled off a absolute thriller there. They lost on the last ball. And they will believe that yes, they have posted a good total, they have got a good side. And yeah, when you assess the previous game, it's just that they did most of the things right. In a game, someone has to win, someone has to lose. But what important is you've got to learn where you have made the mistakes and try to introspect and come better.
I think they must have really assessed themselves. And here they begin Bajrangi Capitals openers Abhishek and Atul with Sohail, the ball in his hand, nicely bowled. So almost when he is charging towards the popping crease, it's almost like a leather ball cricketer with a smooth run up and clean action, charging in and stepping. Wonderful sight. I always been impressed and enthralled by the fast bowlers. And he is someone who has generated a lot of pace. He bowls very difficult length. That's wide. There's plenty of pace, and that's indication because keeper is